हेलो एंड वेलकम बैक टू विद्यार्थी एजुकेशन। तो आज आम ओसीएस 2025 रो जीएस पेपर 1 को सॉल्व करिया। एटा मु सेट ए सॉल्व करछि। आपण माने सही हिसाब रे आपण क्वेश्चन पेपर रे क्वेश्चन देखिकी आपण भी चेक कर देंतु आंसर्स। नंबर 1 देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ एज प्रोवाइडेड in the Constitution of India. Okay, established by law, procedure established by law. फर्स्ट स्टेटमेंट कौन कौन इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव एक्शन। ठीक अच्छे, एक गोपालन केस गोटे होता है जो कहता है कि एग्जीक्यूटिव कैन नॉट डिप्राइव ए पर्सन ऑफ लाइफ फॉर पर्सनल लिबर्टी। तो ये ठीक अच्छे। सेकेंड स्टेटमेंट कौन इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट लेजिस्लेटिव एक्शन। एटा भूल। ओके, कहीं एटा किसी भी माने इट डज नॉट प्रोटेक्ट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन बट ड्यू प्रोसेस डज इट। एटा करेनि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जोटा अच्छे हमर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एटा कौन करे हमर चेक करे लॉ माने लॉटा वैलिड अच्छी कि नहीं। ओके, फेयर अच्छी कि नहीं। ओके, स्टेटमेंट 3 कौन कहूँ आर्टिकल 22 वाज इनकॉर्पोरेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन एज एडिशनल सेफगार्ड्स आफ्टर डिबेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक अच्छे। आर्टिकल 22 कौन कहूँ एक्चुअली ना गोटे एडिशनल सेफगार्ड दौच। ओके, एडिशनल सेफगार्ड दौच। it is माने ये आर्टिकल तैयारी थला टू रेमेडी द डेफिशिएंसीज एंड द पब्लिक क्रिटिसिज्म जोटा कि गोटे सराउंड करथला कि हमर ड्यू प्रोसेस टाको ओमिट करा हिची बोली फ्रॉम आर्टिकल 21 को। तो एटा आर्टिकल 22 गोटे इंट्रोड्यूस करा हितला। गॉट इट। आर्टिकल सॉरी स्टेटमेंट 4 देखिए, इन द बैंक नेशनलाइजेशन केस द सुप्रीम कोर्ट अडॉप्टेड इट्स स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन। ना, नो, नेवर। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर देथिला जोड़ा तार प्रीवियस स्ट्रिक्ट और रिजिड इंटरप्रिटेशन थिला फंडामेंटल राइट्स सकाशे जोटा कि म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी गोटे है म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी है कि जो सिलो थ्योरी कहूचे आम दैट से रिजेक्ट करथिला। इट डिड नॉट माने अडॉप्ट इट डिड नॉट अडॉप्ट इट। ओके, सो तो आंसर कौन हम टू स्टेटमेंट्स करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोची विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड रिसेंटली बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ कार्बन ट्रेडिंग और एमिशन रिडक्शन मैकेनिज्म। ओके, देखिए कार्बन मार्केट पोर्टल, हाँ एटा होची। परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम जोटा एटा भी होची। प्रकृति देखिए नेशनल कार्बन रजिस्ट्री एटा भी होची। तो आंसर हम हम प्रकृति। प्रकृति है गोटे एनवायरमेंटल अवेयरनेस मैस्कट है एनवायरमेंटल अवेयरनेस खेलवाई कि गोटे मैस्कट। ओके, यहाँ किए माने किए बाहर करते मिनिस्ट्री ऑफ कौन एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ओके, इट इज बेसिकली एम्ड एट माने कौन इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट आउ जोड़ा सिंगल यूज प्लास्टिक अच्छे ताको एलिमिनेट करने। ओके, तो बेसिकली प्लास्टिक एलिमिनेशन कि यही प्रकृतिर जो मैस्कटटा आम बन। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 से कही कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेजर्ट क्लाइमेट एंड सॉइल्स। ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए से कही एरिड सॉइल्स shows significant leaching due to rainfall। it लगे एरिड सॉइल्स। ओके, तो आम जानी एरिड क्लाइमेट रे। ओके, आ एरिड क्लाइमेट रे रेनफॉल कौन रेनफॉल लो रोची बुझेला। तो वेरी लिटिल टू नो लीचिंग हवा कथा, तो इटा भूल गला। ओके, लीचिंग हब ही नहीं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 कौन कहूँ डेजर्ट सॉइल्स आर ऑफन कोर्स टेक्सचर्ड एंड वेल ड्रेन्ड। ठीक, कोर्स अच्छी वेल ड्रेन्ड कहीं ना तांकर थाए कौन लॉट ऑफ जो सैंड आउ ग्रेवल थाए। ओके, तो गैप्स बहुत थाए, तो इट इज मेनली कोर्स टेक्सचर्ड आउ वेल ड्रेन्ड। गैप जेहेतु थाए पानी आराम रे ड्रेन ही जाए। थर्ड कौन कहूँ एटा ठीक अच्छे। थर्ड कौन कहूँ एंटी सॉइल्स आर हाईली डेवलप्ड सॉइल्स विथ मल्टीपल होराइजन्स। ना, भूल, एटा भूल। कहीं ना एंटी सॉल्स होचंती माने लिटिल टू नो प्रोफाइल डेवलपमेंट रोच है हाईली डेवलप्ड। तो ओनली 2 करेक्ट ऑप्शन है 3 ए करेक्ट बुझेला। नेक्स्ट
Which consider the following statements with respect to IPCC assessment. Easy question, I guess. So IPCC was established by UNEP and WMO. Perfect. को year रही 1988. Second statement कौन कौन IPCC directly enforces emission reduction. ना किसी भी enforce करे नहीं. It is totally advisory. Okay. Advisory scientific body. Okay. किसी enforce करे नहीं. It basically policy relevant जिनसे बने rather than instead of policy prescriptive. So no regulatory power. Got it? तो statement 3 को fifth assessment report highlights rapid warming since 1950s. ठीक है. IPCC provides a scientific basis for policy making. ठीक. तो तीनटा ठीक है. तो 4 answer C होगा. Okay. Next question. Consider the following statements with respect to Prashast 2.0. Prashast 2.0. देखिए. The first statement कुछ a mobile app launched by the Ministry of Social Justice and Empowerment. भूल. एटा करूची हमर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन. ओके. जोटा कि डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी पे. एटा किए डेवलप करथिला? डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी. गॉट इट? तो एटा भूलेला. सेकंड देखिए टू स्क्रीन स्कूल चिल्ड्रन विथ रेस्पेक्ट टू 20 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज. एटा भी भूल. 20 नुए 21 टाइप्स. 21टा डिसेबिलिटी अच्छे आमर जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 रे. ओके. नेक्स्ट एम्स एट अर्ली स्क्रीनिंग एंड इंटरवेंशन इन इंटीग्रेटिंग द आइडेंटिफाइड चिल्ड्रन टू द सोशल बिहेवियरल एंड मेन स्ट्रीम एजुकेशन एनवायरनमेंट. एटा ठीक अच्छे. नेक्स्ट कही कौन इट्स इंटीग्रेशन विथ UDISC प्लस इज पेंडिंग. ना नॉट पेंडिंग. एटा ऑलरेडी हेगलानी. इट्स ऑलरेडी लाइव एंड फुल्ली फीचर्ड. ओके. Not only with UDISC plus ता जगह अच्छे आमर आपार आईडी आउ रहीगला स्वावलंबन. ओके. तो ये भूल गला. 2 आउ 4 भूल से कौन पचाची केतेटा ट्रू अच्छी. तो 2टा ट्रू अच्छी. ऑप्शन बी हम 5 रो सॉरी 1 2 एंड 4 ठीक भूल अच्छी. तो खाली गोटे ही ठीक हम. ओनली 1 करेक्ट. मुझे लगा. नेक्स्ट भाई जी कंसिडर द फॉलोइंग मैच विथ रेस्पेक्ट टू आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन टू रिक्लेम द अनक्लेम्ड फाइनेंशियल एसेट्स. देखिए फर्स्ट कोई बैंक डिपोजिट उद्गम पोर्टल. एटा पूरा ठीक अच्छे. आरबीआई बेसिकली ये स्टार्ट करते उद्गम फुल फॉर्म कौन मत लिखी कह कमेंट रे. उद्गम फुल फॉर्म कौन. ओके. सेकेंड कही से इंश्योरेंस प्रोसीड्स बीमा किरण पोर्टल. ना एटा भूल. बीमा किरण नुहे. एटा होची बीमा भरोसा. बीमा भरोसा एटा कहा द्वारा ना IRDAI. बुझेला. एटा कौन हुए ना अनक्लेम्ड इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम्स जोड़ा अच्छी और जो प्रोसीड्स अच्छी सेटा को ट्रेस करा हुए और मैनेज करा हुए. कहा थ्रू रो ना IRDAI थ्रू रो. ओके. तो यहाँ हूँ बीमा भरोसा पोर्टल नॉट बीमा किरण पोर्टल. नेक्स्ट देखिए सेठी कही म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट जोटा कि मित्र पोर्टल. ठीक अच्छे. मित्र पोर्टल मित्र फुल फॉर्म कौन ना म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल. ओके. देन कौन कही ना डिविडेंड्स एंड शेयर विथ सेबी पोर्टल. एटा कौन एटा ठीक अच्छे. ओके. एटा भी ठीक अच्छे. तो आंसर कौन हम ऑप्शन 3 ओनली 3 करेक्ट है. जो आमर फोर्थ ऑप्शन जोड़ा रहा डिविडेंड शेयर बाय सेबी पोर्टल से कौन इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अच्छी गोटे सॉरी IEPFA. एटा देखुच ए जिनसटा. ओके. IEP इन्वेस्टमेंट सॉरी इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी. Got it? Next question. Match the following biosphere reserves with their corresponding state and the year of national designation of India. Okay, देखिए फर्स्ट बायोस्फीयर कौन कही हमको ना पन्ना. पन्ना कोडी अछि मध्य प्रदेश. ओके. एटा केबे हेतला 2011. ओके. एटा 2011 माने A2 हला. नंदा देवी केबे हेतला
ना 1988 ओके एटा 1988 माने कि बी होची 1 अगस्त्य मलाई तमिलनाडु केरला रे जोटा अछि सेटा हे जेतला 2001 रे ओके एटा ला C4 एंड लास्ट पहुंचला D जोटा कि 3 जो कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश 2009 रे ओके देखिया ऑप्शन कोडी अछि हमर कोन थला 2143 ऑप्शन डी गॉट इट ऑप्शन डी आंसर क्वेश्चन नंबर 8 with reference to pipeline transportation of oil consider the following statements okay it is say in regions such as Europe, Russia, West Asia, India pipelines are widely used to transport crude oil from oil wells and refineries ठीक अछि second कौन कहि pipeline networks are generally absent in Central Asian countries due to conflict difficult terrain and political constraint ना बहुत अच्छी भाई पाइपलाइन बहुत अच्छी सेंट्रल एशियन रे लेट्स से लाइक सेंट्रल एशिया चाइना पाइपलाइन जोड़ा अच्छे हमरो सेंट्रल एशिया चाइना पाइपलाइन गोटे गला देन हमर गला कैस्पियन पाइपलाइन गला ओके तो एटा भूल गला इट इज नॉट एब्सेंट देयर आर ओके थर्ड कहिछि तुर्कमेनिस्तान हैज डेवलप्ड पाइपलाइन कनेक्टिविटी एक्सटेंडिंग टू ईरान एंड पार्ट्स ऑफ चाइना वेरी गुड करेक्ट तो 1 and 3 करेक्ट कोडी अछि ऑप्शन बी 8 रो ऑप्शन बी गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन with reference to World Trade Organization consider the following statements okay its headquarters are located in Geneva Switzerland कौन लाउछ ठीक ने ठीक Geneva Switzerland रो अछि ना WTO टा as of December 2024 it has 166 member countries is it correct 166 टा ठीक आउ मोस्ट रिसेंट को दीटा आसला ना कोमोरोस आउ कोडा आसला तिमोर लिस्टे ए दीटा कंट्री ऐड हले ठीक अछि थर्ड कोन कहै छी इंडिया इज अ फाउंडिंग मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ठीक अछि नेक्स्ट कोन कहै छी इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1945 along with United Nations systems ना एटा भूल गला आमर के बेइतला एटा ना 1 जनवरी 1995 रे हितला ठीक अछि कोन हितला ना मार्राकेश एग्रीमेंट ओके सेइतरे हितला एटा कोन करतला रिप्लेस कर देतला हमर जो GATT थिला गैट जोडा थिला सेटा को रिप्लेस करके हमर WTO हे गला केबे ना 1 जनवरी 1995 तो हमको एडी WTO विषय रे पचरछि तो 1995 गॉट इट चलो नेक्स्ट 10th कोची consider the following major ports of world and match them with their correct functional classification okay देखिए तो फर्स्ट कोची माराकाइबो वेनेजुएला रे जोटा अछि एटा कोडी अछि व्हाट इज दिस इट्स एन ऑयल पोर्ट तो एटा अब 2 ओके रॉटरडैम यूरोप एटा कोन एटा ऑन्ट्रपोर्ट ठीक अछि एटा 1 ना कोची कोची इट इज अ नेवल पोर्ट जान सब 4 ओके आउ एडन येमेन पोर्ट ऑफ कॉल बंचेला लास्ट को जोड़ा तो 2143 लेट्स सी या ऑप्शन डी 2143 बुझियला क्वेश्चन नंबर 10 रो आंसर होची डी 11th कोची कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एजुकेशन पॉलिसी एंड लर्निंग आउटकम्स इन इंडिया एंड ओडिशा देखिया सब स्टेटमेंट्स पढ़िया टिके डिफिकल्ट लागुची बड़ बड़ मोटा मोटा स्टेटमेंट गुड़ाक मन दे पढ़िया पड़ो लेट्स सी फर्स्ट कौन से NEP 2020 recommends home language or mother tongue as medium of instruction until at least grade 5 ठीक अच्छे एटा बट ओडिशा फेसेस challenges due to multiplicity of tribal languages ठीक हमर एटा कुहाई क्लास 5 जाए करिया को बट मदर टंग कोटा हिसाब नि आबो काना ओडिशा रे बहुत ट्राइबल लैंग्वेज अछि आ सेमाने अधार अधिक तो ओडिया जान नांती ठीक अछि तो एट पॉइंट गेडा डिफिकल्टी होतला हमर नेक्स्ट देखिया Odisha's Mo School Abhiyan has been successful in mobilizing alumni funds for infrastructure, but studies show weak correlation between infrastructure and learning outcomes without pedagogical reforms. Of course, खाली भलो इंफ्रास्ट्रक्चर बने देले थोड़ी ना पिला भलो पढ़ देबे भलो टीचर भी दरकार भलो हमको बहीपत्र भी दरकार भलो पढ़ा पढ़ी भी ठीक हवा था ना खालटर बिल्डिंग बने दो पिला पास ही जुए ना को ना
तो एटा ठीक कहि से इट हैज अ वीक कोरिलेशन. नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट कौन कहि से because ESSER 2023 for Odisha shows that while enrollment remains high, which is more than 95%, the proportion of class 3 children who can read a class 2 level text has declined compared to the pre-COVID levels. It has recovered. It has recovered. Aguru thila around 20.9%. ଏବେ ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି around 40%, nearly 40% ହେଇଗଲାଣି. ଓକେ, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା. ट्रेंड एक्चुअली रिकवरिंग ट्रेंड अच्छे, डिक्लाइनिंग ट्रेंड नहीं. नेक्स्ट कही ओडिशा शिक्षा सहायता योजना प्रोवाइड स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन टू SC ST OBC स्टूडेंट्स बट रिन्यूएबल रिक्वायर्स 75% अटेंडेंस व्हिच इज डिफिकल्ट फॉर वेज लेबरर्स. भूल. SC ST OBC को पाई नुहे एटा. एटा होची दी प्रकार लोक पाई. गोटे वल्नरेबल आउ गोटे होचंती हमरो मार्जिनलाइज हाउसहोल्ड्स. ओके, आगे वल्नरेबल कौन किए जो मैंने HIV रे अच्छी HIV एड्स जहाँ हुई कि जार हाउस होल्ड तांकर कौन हुए ना विदाउट शेल्टर अच्छी हाउस होल्ड विदाउट शेल्टर. नेक्स्ट है आमर मैनुअल स्कैवेंजर्स जो मैंने अच्छा मैनुअल स्कैवेंजर्स. देन होचंती आमर PVDG ग्रुप जो गुड़ाक अच्छा PVDGs. देन है आमर ऑर्फन्स. ओके, अब मार्जिनलाइज कौन मार्जिनलाइज माने जार इनकम ईयरली लेस देन 2.5 lakhs है जोटा पर एनम 2.5 lakhs मेनली कौन हुए ना. इट शुड माने समवट लेस देन 10,000 पर मंथ. एटा भी गोटे क्राइटेरिया. ओके, इनकम ऊपर. तो ये केटा स्टेटमेंट आमर ठीक अच्छे कौन पचार करेक्ट ठीक दीटा अच्छे. तो ऑप्शन बी हम आंसर. गॉट इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 12. Who said the Arab invasion of Sindh is a triumph without results? किए कहते हैं? एटा कहते स्टैनली लेन पूल. कहीं ना इट डिड नॉट लीड टू एनी इमीडिएट एक्सपेंशन ऑफ दिस मुस्लिम रूल. माने गोटा जो हार्ट ऑफ इंडिया को सेटा एते भलसे कौन है कि एक्सपेंशन हो पारे मुस्लिम रूलटा जोटा से करिया चाहते अरब्स माने. ओके, तो इतने इट वाज अ जीति तो गले बट इट डिड नॉट यील्ड एनी रिजल्ट्स जोटा से चाहूले कि मुस्लिम येटा को टिके बढ़ेबे बोली मुस्लिम रूलटा. गॉट इट हलानी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. हु कन्फेस्ड the defeats of many Billies and Braithwaites will not destroy them. I can ruin their resources by land but I cannot dry up the sea. किए कहते एटा? एटा कहते हैदर. जितला हमर एंग्लो मैसूर वॉर हेतला को वॉर एंग्लो मैसूर वॉर. हैदर पाखे भल आर्मी थिला. ठीक अच्छे. सो बिलीज एंड ब्रेथवेट्स जो कही सी ये जो थिले कमांडर्स थिले बिली और ब्रेथवेट से आर्मी कमांडर्स थिले. ओके, तो तांको डिफीट करिया को से पारि थांता माने तांको से डिफीट कर पारता जमती तांका रिसोर्सेस उडा डिप्लीट करके डिस्ट्रॉय करके से मानको हरै पारथांता. बट ता पाखे नेवल स्ट्रेंथ नथिला. ब्रिटिशर्स का नेवल स्ट्रेंथ बहुत थिला. तो सी इट गोटे कहले कि गोटे मेटाफोरिकल ये वे रे कहले कि आई कैन नॉट ड्राई अप द सी. समुद्र को तो सुखई पारे समुद्र को सुखई देले आ नेवी कौन काम करियो काम कर परियोनी. तो से पे एटा गोटे ये करथिला. तो 13 आंसर हम ए हैदर कहथिला ए जिंसटा. गॉट इट. नेक्स्ट से कहि द महालवाड़ी सिस्टम इन ओडिशा वाज इंट्रोड्यूस इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट. को डिस्ट्रिक्ट रे हमर महालवाड़ीटा इंट्रोड्यूस करा हैथिला. तो आंसर होची संबलपुर. ओके, महालवाड़ीटा कौन महालवाड़ी सिस्टम जोड़ा अच्छी सेटा होची सेटलमेंट्स जोड़ा का अच्छी हमर महालवाड़ी सिस्टम किंबा सेटलमेंट्स. एटा कौन ना कम्युनिटी बेस्ड. ओके, माने जमती कि तांकर विलेज हेडमैन को रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दोतले. ओके, जोड़ा कि रेवेन्यू कलेक्ट करिया पे. आउ जो इंडिविजुअल लैंडलॉर्ड थिले तांको दिया नतला. तो महालवाड़ी सिस्टम एटा हला. आउ जो बाकी तीनटा रहले ए माने परमानेंट सेटलमेंट यूज करथले. परमानेंट सेटलमेंट एटा कौन परमानेंट सेटलमेंट होची जो हमरो जमींदारी सिस्टम जोड़ा मु कहतली कि लैंडलॉर्ड्स एथे लैंडलॉर्ड्स नथिले माने तांको दिया होनतला. एठी थिला जमींदारी सिस्टमटा. गॉट इट. परमानेंट सेटलमेंट जोटा बुझेला. परमानेंट सेटलमेंट और महालवाड़ी सिस्टम रे तक डिफरेंस. नेक्स्ट
Question number 15. The opening of college in Cuttack took place in which year? को year रे हमरा college of college टा खुले आइतला. यार आंसर कौन हबो? 1868 AD. ओके, ये जो कॉलेज इन कटक जोटा एटा एबे यार ना कौन अछि ना रेवेन्सा कॉलेज. ओके, एटा ही फर्स्ट कॉलेज थिला कटक रे. बुझेला? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्वेश्चन असला. जितले स्टेटमेंट क्वेश्चन सॉल्व करियो ना मझिरे गोटे बिकॉज लगे दबा. इजी होबो सॉल्व करिया को. ओके, देखिया the courts are prohibited to inquire to the courts are prohibited to inquire to the advice given by the ministers to the governor. এটা কোন ঠিক না ভুল? এটা হচ্ছে ঠিক. আমার जो आर्टिकल 163 अच्छी से कुहा ठीक अच्छे. एटा को आम माने या जुडिशियल रिव्यू हो पारिबनी या ऊपर. सेकंड स्टेटमेंट कौन कहूँ ना द मिनिस्टर्स हैव नो लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. ठीक अच्छे किंतु कौन एटा बुझाऊँ यहाँ को कौन एक्सप्लेन कर आई डोंट थिंक सो. तो यार आंसर हम बी. दीटा का स्टेटमेंट करेक्ट अच्छे बट इट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द स्टेटमेंट 1. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इट कही consider the following statements regarding aquatic organisms. देखिए, planktons are small organisms that float on water. ओके, एटा ठीक कहीं ना तांको पाखे एति बल नहीं कि से गोटे गोटे करंट रे अगेंस्ट से माने पहरिबार तांको पाखे बल नहीं सेति. तो एटा ठीक अछि. नेक्स्ट कहिजे नेक्टन इंक्लूड्स organisms that actively swim in water. एटा भी ठीक. ओके, केमिति नै माने होचने फिश. नेक्टन्स आर फिश, whales एमान सब होचन नेक्टन. ओके, नेक्स्ट कहिजे बेंथोस आर organisms that live suspended in water column. ना, they live माने पानी ऊपर ही रहती नियर दिस बॉटम भी रहती बट नॉट सस्पेंडेड. दे डू नॉट स्टे सस्पेंडेड. तो एटा भूल गला. तो 1 and 2 करेक्ट कोडी अछि ऑप्शन ए 17 और ए होचे आंसर. नेक्स्ट देखिए विथ रेफरेंस टू साइक्लोन्स आसीला. साइक्लोन्स हमें देखिए साइक्लोन्स फॉर्म व्हेन सी टेम्परेचर एक्सीड्स 27 डिग्री. एटा मोर टिके डाउट रोचे कान एटा -27 ना 27 मु जाननी. यदि एक्सीड्स -27 माने आहुरी नेगेटिव वर्ड को जीवो -28 -29. बट इफ इट इज कौन कहबी प्लस रे जदि था मैं खाली एटा लिखा माने हाइपेन बोली भाबुची कि बा किछ भी पारे देन एटा एक्सीड करिया दरकार. तो हमको साइक्लोन फॉर्म करिया 27 डिग्री सेल्सियस दरकार. ओके, तो जदि मु एटा को पॉजिटिव रे नेले एटा ठीक हबो, जदि एटा नेगेटिव हिसाब रे नेले एटा भूल हबो. देखिया नेक्स्ट देखिया सेमिति करिया गले जदि एटा मु काट एटा भूल हिसाब रे नेउची मु आंसर हे जो सी कान एटी 1 नहीं. जदि एटा ठीक हिसाब रे नेले बाकी एटा देखिया पड़ियो. देखिया एटी देखिया हाई प्रेशर जोन्स इनिशिएट साइक्लोन्स. भूल. हाई प्रेशर केमती करियो हमो लो प्रेशर दरकार ना ओटे साइक्लोन क्रिएट हबा को. तो एटा भूल गेला. 2 कोडी देखिया भूल हबो कि एटा भूल गेला. 2 आ कोडी अछि एटा ही भूल गेला. तो एटा तो हबनी. तो आइदर एटा हबो. तो ई हिसाब रे 1 टा ठीक हबा कथा हमरो. तो आम एटा प्लस हिसाब रे नहीं था एबे पाई एटा ग्रेस मार्क मिल पारे कि कोन हुए मु जाननी. तो एटा हम प्लस हिसाब रे नबा. तो 1 इज करेक्ट. से कहै विंड स्पाइरल्स इनवर्ड्स टुवर्ड्स द लो प्रेशर सेंटर. एटा कोन ठीक. एटा ठीक हे जीवो. हां कहीं ना आमर कौन हुए एयर जो है सेटा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाए. ओके, लो प्रेशर कोटा था लो प्रेशर रे आमर आई थाए साइक्लोन आई. ठीक अच्छे. तो सेट स्पाइरालिंग हुए. स्पाइरालिंग टा कौन पाई हुए ड्यू टू कोरियोलिस फोर्स. कोरियोलिस इफेक्ट जोटा था से पाई स्पाइराल जाए विंड. गॉट इट. नेक्स्ट कहै साइक्लोन्स मूव टुवर्ड्स रीजन्स ऑफ हाई प्रेशर. ना यार हमको लो प्रेशर जीवन से एटा भूल गला. देखिए 4 कोटी भूल अच्छे एटा भूल अच्छे. ओके 480 डिलीट गला. तो आंसर कौन ऑप्शन ए 18A मो हिसाब रे 18A हम आंसर. देखिए फिफ्थ कौन अच्छी साइक्लोन्स डिराइव एनर्जी फ्रॉम ओशन हीट. ठीक अच्छे. एटा ओशन हीट हम पानी राइज कला लो प्रेशर को आउ कौटी क्रिएट हो सी सॉरी आमर लैंड रे लो प्रेशर क्रिएट हम से जगह एयर टा हमको उपरू पड़ेब. ठीक अच्छे. उपरू पड़े से जगह वैक्यूम हो. तो यहीटा को टाणी नहीं जीव सियाड़े लो प्रेशर को पड़ेब. बुझीगला. तो यार आंसर हम 18A जदि एटा को हम प्लस नहीं जाउछ नले एटा देखिबो. नेक्स्ट क्वेश्चन. Consider the following statements regarding outcomes of COP30. COP30. Okay. बढ़िया. The first statement is the Belém package
focuses primarily on setting new binding emission targets. No, ଆଉ setting vetting କରିବାର time ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ, କ୍ଲାଇମେଟ୍ ବୋରା ଅଳିଆ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଏଇଟା ପୁରା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଥିଲା, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଆଉ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ। ଓକେ, ଯାହା ତମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ନେଇଛ ତାକୁ ପୂରଣ କର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଆଉ ନୂଆ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବୁନି ତମକୁ, ବୁଝିଲା? ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଲା। ୱାନ୍ ଦେଖିବା କୋଉଠି କୋଉଠି ଭୁଲ ଅଛି, ଦେଖିବା ଏଲିମିନେସନ୍ କରିପାରିବା କି? ହଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଟିଗଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ କଟିଗଲା, ସି ଆଉ ଡି ଭିତରେ ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। The global Mutirao, ଜାଣିନି ଏଇଟା କେମିତି ପ୍ରନାଉନ୍ସ କରନ୍ତି, ତମେ ଦେଖିବ। That agreement prioritizes implementation over ambition। ଠିକ୍, ଏଇଟା ଠିକ୍। ଟୁ କୋଉଠି ଠିକ୍ ଅଛି, ଦୁଇଟା ଟୁ ଅଛି, ଭେରି ଗୁଡ୍। The just transition mechanism includes legally guaranteed financial commitments। ନା, এইଟା ହେଲା ଅସୁବିଧା। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆସିଥିଲା, ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଇନକ୍ଲୁଡିଂ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ବି, ମାନେ ମେନଲି ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇଟାକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିଥିଲେ କି ତମେ ଭାଇ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଟମେଣ୍ଟସ୍ କାହିଁ ରଖୁନ, ଫଣ୍ଡିଂ ନହେଲେ ଆମେ କାମ କେମିତି କରିବୁ? ସୋ ଇଟ୍ ଫେଲ୍ ଟୁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟେବୁଲ୍ କିମ୍ବା ଲିଗାଲି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟେଡ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କମିଟମେଣ୍ଟସ୍, ଯେମିତି ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କଲେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର, ଗୋଟେ ମାନେ ୱିଦାଉଟ୍ ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଫଣ୍ଡିଂ ଦେ କ୍ୟାନଟ୍ achieve the targets। ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଓକେ, ତ 3 କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଆ, କାଟିଦବା, ଏଇଠି କଟିଗଲା, ଆନ୍ସର ଡି। ଦେଖିଆ 4th ଦେଖିଦବା, ଦ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଟ୍ରାକର ଇଜ ଇଣ୍ଟେଣ୍ଡେड ଟୁ ଆସେସ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ 1.5 डिग्री सेल्सियस पाथवे। ठीक अच्छे एटा बुझिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 से कहछि इंडिया इंटीग्रेट, क्वेश्चन नंबर 20 से कहछि इंडिया इंटीग्रेट्स बायोडायवर्सिटी फाइनेंस विथ डेवलपमेंट प्लानिंग। ओके, तो या माने कोन? ओके, तो जदि हम देखिया एटा हबो हमर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैराडाइम। कौन ना एटा गोटे एनश्योर करूँ कि गोटे इकोनॉमिक ग्रोथ आउ गोटे एनवायरमेंट कंजर्वेशन हम, तो बेसिकली इट शुड गो हैंड इन हैंड। तो यार आंसर है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट पैराडाइम। ओके, क्वेश्चन नंबर 21, which of the two articles of the Indian Constitution override the fundamental rights with respect to Article 14, right to equality and the state level economic redistribution? तो बेसिकली ये हम कथा डीपीएसपी विषय। ओके, डीपीएसपी को आर्टिकल अच्छे मत कहब क्या? बेसिकली ऑप्शन बी 39 बी एंड सी, बुझिला? तो 39 बी रे कहिछि कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेस। ओके, आउ सी रे कोन कहिछि? से कहिछि प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ। तो आंसर अब भी बुझिला। These cannot be challenged or declared void on the ground that they violate fundamental rights, Article 14 and 19. बुझिला, got it? Next, 22. In which article of Indian Constitution doctrine of estoppel is found? Doctrine of estoppel जीवन में केबे सुनथला कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हो रही जिंस ना, तो बिल्कुल ही नहीं। एटा हमर कोडी अछि, एटा एटा स्टैट्यूटरी जिंस कोडी मिलिबो ना, इंडियन एविडेंस एक्ट किबा एबे जोडा हे जायछि हमर कोन भारतीय साक्ष्य अधिनियम। बुझिला? तो आंसर अब नन, और कॉन्स्टिट्यूशन है नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, अंडर हुज प्राइम mentorship under whose prime ministership the nomenclature of prime ministers of secretariat was changed to prime minister's office? यार आंसर अब मोरारजी देसाई। ओके, 1977 ने हितला ई जिंसरा। ओके, नेक्स्ट, consider the following with respect to pygmy hog Porcula salvania। ओके, pygmy hog भी सर दिखदा दिए। It is the rarest species of wild pig। ठीक, it inhabits in tall, dense, wet alluvial grasslands and Himalayan southern foothills। ठीक, जेमती हम उत्तर प्रदेश रो आसाम नहीं जाओ, देन नेपाल हे गला, भूटान हे गला, ए जगह सब पांती, तो हिमालयन फुटहिल्स रहिले ही। ओके, नेक्स्ट, स्टेटमेंट 3, it is critically endangered species as per IUCN। exactly, very good। then their conservation was started by the trust founded by Gerald Durrell। ठीक, चारटा ठीक अच्छे, ऑप्शन डी 24D, got it? Next, the Mpemba effect
ता विषय देखिया द फ्रीजिंग ऑफ हॉटर वाटर फास्टर देन आगे आम जानता एम्पेबा इफेक्टा कौन एटा कौन इट इज अ काउंटर इंटुइटिव फेनोमेनन जो कौन हुए ना हॉट वाटरटा इट विल फ्रीज फास्टर देन कोल्ड वाटर अंडर स्पेसिफिक आइडेंटिकल कूलिंग कंडीशन आम देखो किसी रिल जो देखो तुम मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स कि इंस्टा रिल्स देखो सी तो देखो रशिया रे किसी लोक कौन करते गोटे ससपैन रे गरम पानी आणती एमती उपरू छाड़देला बेलू एमती पूरा स्नो पड़ला भाया हो जाए गैस हो पूरा स्नो पड़ला भाया हुए है कि ठंडा पानी कला बेलू हेनी से जिनसा है तो सहीटा हूँ एम्पेबा इफेक्ट कौन हुए ना फ्रीजिंग ऑफ हॉटर वाटर फास्टर देन कूलर वाटर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन तो यहाँ ठीक अच्छे ओके से कही JLN Advanced Scientific Research Jawaharlal Nehru and Advanced Scientific Research has used supercomputers to develop the first simulation of ice formation proving एम्पेबा effect of water एटा ठीक कि नहीं एटा हूँ ठीक पूरा ठीक जवाहरलाल नेहरू करथिले कही नेम्ड आफ्टर नाइजेरियन साइंटिस्ट एरास्टो एम्पेबा ना नाइजेरियन नुहे बाबू टांजानियन ओके एटा भूल है Then कही Aristotle, Robert Hooke and Descartes have noted about this experiment earlier. ठीक relaxation of materials due to sudden temperature changes is technically called out of equilibrium phenomena. ठीक तो कितना ठीक है गोटे भूल है तो ओनली गोटे भूल ना तो डी हम आंसर डी हूँ आंसर 25 रो ठीक नेक्स्ट देखिए presently a 9-judge bench of Supreme Court is hearing the Sabrimala reference. Okay. Consider the following statements relevant to 9-judge bench. It is as per the article 145(3) of the Constitution. Is it correct? Very good. It is correct. It is for deciding cases involving substantial question of law. जो 9-judge bench बसे. Anything more than 7 judge is a question of substantial law. ठीक है सेकंड कह केस पुट्टस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एथेरे भी बसी थिला एथेरे कोन होइतिला ना हमर राइट टू प्राइवेसी डिस्कस होइतिला राइट टू प्राइवेसी ओके एथ पे भी बसथिला ओटे बेंच नेक्स्ट कोन कह इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एटा भी ठीक एथेरे कोन होइतिला ना रिजर्वेशन विषय डिस्कशन होइतिला एथेरे वर्डिक्ट आस्तिला एसआर बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इथरे भी होइतिला एथरे कोन होइतिला एटा गोटे जो आर्बिट्रल डिसमिसल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जोटा रोतला आर्टिकल 356 अंडर रे सेटा गोटे स्ट्रिक्ट गोटे रिस्ट्रिक्शन रखिला ता ऊपर सेन खालखालटे कर दे परबनी ओके सो किछ गोटे पूर्ण होतवा दरकार गॉट इट तो ऑल 4 करेक्ट क्वेश्चन नंबर 26 सरला 27 which of the following statements about the children's Booker prize is not correct कोटा भूल अछि हम खोजिया 8 देखो गुड क्वेश्चन देखो माने ये जो स्टेटमेंट देखो 827 अछि सेम इट विल बी अवॉर्डेड एनुअली फ्रॉम 27 इट विल बी अवॉर्डेड फ्रॉम 28 तो इथर गोटे भूल अछि कंपलसरी देख दबा इट विल बी अवॉर्डेड एनुअली फ्रॉम 27 एटा ठीक अछि ओके 2027 ही हबो भूल गेला तले एटा भूल गेला देखिया 2 गुड गुड अछि काट द एटा गुड कटिला एटा गुड कटिला सॉरी माय बैड जोटा ठीक अछि हम देखिया ना त हमें देखिया 1 टा गुड अछि कटिदा एटी कटिगला तो 2 अच्छी तो एटा भी कटिगला द ए आउ सी भीतर हमर पाटतुंड 4 टा दिख दबा डायरेक्ट द फाउंडिंग पार्टनर एंड पार्टनर प्रिंसिपल फंडर ऑफ इट इज टीवीएस फाउंडेशन ना टीवीएस में आको एटा भी देखो सेम जिंस खाली लोक लगा तो एटा ठीक अछि एटा भूल अछि 2 and 4 आर इनकरेक्ट तो ऑप्शन ए हबा हमर आंसर 27 रो ए गॉट इट नेक्स्ट क्वेश्चन 28 Which of the following processes involves a decrease in entropy? Entropy कौन? Entropy कौन करे ना it measures the randomness or a disorder. Okay? Entropy कौन ना randomness देखे or else a disorder. Okay? देखिए first कौन कोई burning of coal in air ना formation of NH3 from H2 and N2 yes correct केमिति देखो जिनसटा देखो एडी को हुए आमे तले रिएक्शन लिखुचे हमें कौन कही N2 और H2 N2 थिला ठीक है हेडा गोटे गैस H2 कौन को दउची NH3 जदि हम बैलेंस आउट करियो जिनसटा एडी 3 एठी 2 2 3 सॉरी 2 3 6 3 2 हां ठीक अछि एटा होची तार पूरा रिएक्शन टा एठी हेला देखो एठी 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन हला
एठी 3 हाइड्रोजन टोटल 4टा थिला ओके एठी कोन होछि 2टा हे गला NH3 रो 2टा हे गला तो कमी गला डिक्रीज हे गला एंट्रोपी टा डिक्रीज हे गला ना त आंसर अब 28 रो बी ओके एठी 2टा मोल ऑफ 4टा मोल ऑफ गैस थिला एठी 2टा मोल ऑफ गैस हे गला नेक्स्ट देखिया With reference to the geomorphological evolution of the peninsular plateau of India, match the following hill ranges with their corresponding geomorphological origin and characteristics. Okay, देखिया कौनटा होचे इथरे first Aravalli range, highly denuded remnant of an ancient fold mountain system, residual mountain. ठीक अछि एटा ठीक अछि Nallamala hills, structure hill ranging from major segment of the eastern ghats. हाँ eastern ghats तो अच्छी देखिए next थोड़ा दिखदा Javadi hills, dissected plateau remnant present in the eastern ghats. हाँ dissected अच्छी Javadi hills dissected अच्छी okay Mahendragiri hills, northeastern discontinuous extension of the eastern ghats near the coastal plain. ठीक महेंद्रगिरी टा हमर कोडी अछि ओडिसा रे अछि ठीक तो एटा भी ठीक हेला देखिया 1 2 3 4 कोडी अछि 1 2 3 4 ऑप्शन बी ओके ऑप्शन बी हेला आंसर गॉट इट नेक्स्ट देखिया क्वेश्चन नंबर 30 Consider the following statements regarding the statutory definition of disaster as provided under the Disaster Management Act 2005. First देखिए ऑप्शन को मैंने स्टेटमेंट थोड़ा पढ़िया देखिए it covers events arising from both natural and anthropogenic causes including those due to accidents or negligence. ठीक है it necessarily entails a large scale loss. Necessarily a large scale? No, not necessarily. Substantial loss of life or human suffering कहबो but not large scale of loss of human life to be classified. माने necessarily एमदी बहुत जन मन ही तम सेडा डिजास्टर कहि पर दैट्स नॉट द थिंग बट सब्सटेंशियल लॉस हितबा दरकार ह्यूमन हो कि हमर ह्यूमन सॉरी लाइफ हो कि ह्यूमन सफरिंग हो लाइक फाइनेंशियल लॉसेस वगैरह वगैरह ओके तेटा भूल है देखिए कौन पचे छी केतरा करेक्ट अछि तो 2 तो एटी भूल है 2 डा काट दवा एटी कट गला आंसर बी लिखदा It includes damage to property, to environment, resident. ठीक है characterized by an occurrence of such nature of magnitude exceeds the coping capacity. हाँ ठीक है मिलेगा आंसर नेक्स्ट 31 with reference to oil seeds in India, consider the following statements. Oil seeds are cultivated primarily for the extraction of edible oils. इतर कोन भूल अछि किछि भूल नाही पूरा ठीक अछि एटा करेक्ट पचाछि हाँ करेक्ट पचाछि Dryland regions such as Malwa Plateau, Marathwada, Gujarat and Rajasthan are important oilseed growing areas. Very good. किछि भूल नाही इतरे Oilseeds occupy about 1/3 of the total cropped area in India. India केडो बड़ जगह तार cropped area केडो बड़ हितो तार 1/3 कोन हम खाली oilseeds उगोचे never I don't think so a very extreme जिंसो एटा होछि around 13 to 14%. Okay, not more than that. 33% is माने far-fetched. Okay, तो 3 भूल अच्छी लास्ट देखिए groundnut, rapeseeds and mustard, soybean, sunflower, major oilseeds crops. हाँ भाई ठीक अच्छी तो 3टा ठीक तो आंसर अब सी 31 सी बुझी हल्ला ओके 32 which of the following correctly describes the geographical behavior of Bahuda, Vansadhara and Nagavali rivers. Okay, ठीक है बाहुड़ा वंशधारा और नागावली देखिए they originate in Chhattisgarh and flow through Odisha to Andhra Pradesh. Is it correct? ना छत्तीसगढ़ रे नहु बाबू ओडिसा रे ओरिजिनेट हेजी दे सब जाक हैला तो एटा भूल हैला they originate in Odisha and terminate within state. ना 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 फ्लो करछि संग संग उभे जो ना कोन नेक्स्ट कहिछि they originate in Odisha and flow into Andhra Pradesh. ठीक अछि before joining the Bengal. ठीक अछि एटा हाँ एटा इंटरस्टेट थिला बोली मोटा काट दिली ओके तो बाहर बाहर आंसर सी देखिए लास्ट कौन अच्छी दे ओरिजिनेट आंध्र प्रदेश एंड फ्लो इनटू ओडिशा कि ना ना उल्टा तो जीवन भाई आंसर हम सी ओके 32 रो सी 33 देखिए with reference to the power sector in Odisha, the Odisha Power Generation Corporation OPGC plays a significant role in thermal power generation in the state. In this context, OPGC was incorporated on यार आंसर होची 14th November 1984 बुझला डायरेक्ट क्वेश्चन किसी से तरह एक्सप्लेनेशन नहीं सो हमें 33 टा क्वेश्चन कर देले 100 रो दैट इज 1/3 ऑफ क्वेश्चंस कंप्लीटेड
आशा करुच्ची एक्सप्लेनेशन गुड़ाक आपण बुझा पड़ुची जदि भी किसी डाउट होची क्वेरीज रोची कमेंट सेक्शन में पचार मु सांगे सांगे क्लीयर करदेवी ओके मुझे पानी पीदे तुम मैंने पानी पीद वीडियो पॉज करके आम पुणी हाथ बाकी रेस्ट 67% करिया ओके पानी पानी पीदेल ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ डेमोग्राफिक ट्रेंड इन इंडिया बिटवीन 1970 ओके ये गोटे पैसेज टाइप दे दीजिए ओके 1971-2021 भितरे इंडिया's total fertility rate declined okay from 5.2 to 2.0 ठीक अच्छे during the same period the proportion of population aged 60 and above increased from 5% to 10% okay the working age population today 15 to 59 it peaked around 2020 and is projected to begin declining after 2040 okay देखिए कौन दीजिए statements based on the description which of the following statements is the most accurate okay India has already entered the fourth stage of demographic transition by co stage first is tinta kon fourth code asla कोट demographic transition विषय लिखा है which information नहीं भूल जमा नहीं okay the demographic dividend window in India is now closed because the working age population has already started declining 8 पे एबे पढ़ले 2040 पर declining start हबो पुणी कोन एटा भूल हला एटा भूल नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया टीएफआर इज स्टिल अबव रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ 2.1 एबे पा पढ़ले हमें 2 को खसी आसलेनी 5.2 रू 82 को पळे आसलेनी भूल नेक्स्ट क्वेश्चन द इंक्रीज इन एडल्ट पॉपुलेशन मींस इंडिया विल फेस एजिंग रिलेटेड चैलेंजेस इवन व्हाइल द वर्किंग एज पॉपुलेशन इज स्टिल आज हां ठीक को मोचला सेडा आंसर हबो ठीक अछि कहना इट हैज देखो काहे कुछ इट तो लिखा है ना 5% ରୁ 10% को डेला बोली इट पड़ गला एडी इंक्रीज्ड सही पे ना बुझियला नेक्स्ट 34 रो डी थला कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टारगेटिंग एंड लीकेज इन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स इन इंडिया एंड ओडिशा ठीक अछि टारगेटिंग एंड लीकेज होचे बोली हां पढिबा बा केडे केडे स्टेटमेंट उडा मुंडो बिंदियो पड़ले केटा अछि पामा चारटा Aadhaar-based biometric authentication for PDS in Odisha has reduced duplicate ration cards, but studies show increased exclusion errors for elderly and tribal population. এটা কোন হবে आंसर এইটা কম পচাছ ঠিক পচাছ এটা ঠিক আছে Odisha's one nation one ration card implementation allows migrant workers from Odisha to access subsidized grains in destination states. Very good. DBT for Manrega's wages in Odisha has reduced corruption but not significantly reduced the delays as fund release remain sequential. हाँ delays हो चाहिए ले भी SCC 2011 data is still used for targeting has not been updated leading to inclusion of households that have exited the poverty and exclusion of newly poor. ठीक 2011 मसीहार तुम डेटा धरिकी बस आज 15 वर्ष बीती गलानी आ किए गरीब रू पड़ेलानी किए गरीब हो गलानी तुम ये डेटा नहीं तो ये आंसर ठीक अच्छे चार्टा ठीक अच्छे ओके 36 population distribution between rural and urban areas is best represented using which of the following graphical methods हाइदर ग्राफ ना अर्गोग्राफ ना लाइन ग्राफ ना डॉट्स एंड स्फीयर्स बेसिकली आम ये कौन यूज करूँ स्कैटर डायग्राम जो आम बनाऊ स्कैटर डायग्राम हो गला आउ जोटा कि आमर माने बेसिकली स्पार्स जिनस गुड़ाक माने कॉन्सेंट्रेटेड रहे माने स्पार्स जिनसटा है डॉट्स गुड़ाक यूज करूँ आम स्पीयर्स कौन ना कौन लार्ज कॉन्सेंट्रेटेड वैल्यूज जोटा कि आम सिंगल पॉइंट ऊपर अच्छी तो बेसिकली यहीटा आमर रूरल यूज हुए यहीटा आमर अर्बन यूज हुए मोस्टली बुझे स्कैटर डायग्राम जो यूज हुए आमर देखिन ये गोटे ग्राफ थी स्कैटर्ड थी ग्राफ तैयारी थी दिस इज डॉट्स एंड स्फीयर्स ऑलराइट नेक्स्ट 37 मैच द करेक्ट पेयर फॉर लिस्ट 1 है लिस्ट 2 ओके देखिए मॉनिटरिज्म करथिला मिल्टन फ्रीडमैन ओके तो एरो 4 को अछि इट सरीला सॉल्व आंसर हेले देख द बी कोन कहै छै एम्प्लॉयमेंट मल्टीप्लायर आरएफ का ठीक अछि तो एटा हे गला कोन बी हे गला एटा ए हे गला मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑफ बैलेंस्ड बजेट एटा होचे हम हेवेलमो सी ओके आउ बंची गला जॉन म्यूथ बंची गला सी होची
rational expectation of hypothesis of B C माने 2 3 4 1 2 3 4 1 सेठी सॉरी मोल्टाटा कहली सॉरी 4 1 2 3 4 1 2 3 ठीक अछि Consider the following pairs. Mudra Rakshasa narrates the ascent of Samudragupta to power. No, never. ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନୁହେଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ओके आगे किए लिखते विशाखा दत्त बुझेला मालविका अग्निमित्रम ड्रामा बाय कालिदास अबाउट सुंगर रूलर अग्निमित्र गोटे लव स्टोरी थिला मन अच्छे मोर ठीक अच्छे मिलिंदा पन्हो कन्वर्सेशन बिटवीन मियांडर जहाँ भी मिनांडर एंड नागसेना ठीक अच्छे एटा ठीक अच्छे एटा गोटे बुद्धिस्ट टेक्स्ट मन रखते एटा गोटे बुद्धिस्ट टेक्स्ट दत्तवंश अ बुद्धिस्ट सेलोनीज क्रॉनिकल ऑफ टूथ रिलिक हाँ जो बुद्धिस्ट गोटे रिलिक थिला तांकर गोटे टूथ रिलिक बोली गोटे अच्छे तो सेटा थिला ठीक विषय तो केटा ठीक है गोटे भूल गला तीनटा ठीक रॉन्गली मैच तो गोटे ओनली वन 38 डे ओके बुझला नेक्स्ट ओ माय गॉड जूम करियो पड़ो हाँ बढ़िया कस्टमर्स ठीक है मैच द फॉलोइंग एनी बेसेंट फर्स्ट इंडियन सॉरी मैच द फॉलोइंग ना ऑप्शंस कौन दीजिए ओके तेरा करेक्टली मैच्ड हाँ एनी बेसेंट फर्स्ट इंडियन वुमेन एट तो भूल गला अबे इंडियन केमती एनी बेसेंट छड़ा बदरुद्दीन तैयब जी फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस इन 1887 ठीक अच्छे महात्मा गांधी बेलगांव कांग्रेस इन 1924 ठीक अच्छे सैयद अहमद खान अर्नड द नाइटहुड इन 1888 ठीक अच्छे तो तीनटा ठीक अच्छे ओनली 3 करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एपटे देख 40 पुणी अगेन मैच ये अच्छे महादेवन कौन करथिले कौन कौन अच्छे विथ रेस्पेक्ट टू लैंग्वेज ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन सिलेक्ट द आंसर यूजिंग ओके हाँ महादेवन जोड़ा थिला और पढ़िया महादेवन ओके लैंग्वेज वाज द्राविडन एंड स्क्रिप्ट रिलाइड अपॉन होमोफोन्स ना लैंग्वेज इज क्लोजर टू द्राविडन रो आगे में उल्टा दिया जीवा सब जगह कहीं पढ़िया ऑप्शंस देखिया वानर ए डी सी बी सब तो अच्छे बी सी डी टीटा छाड़ी हाँ देखिया accept the Dravidian hypothesis and published an impressive computer concordance हाँ computer concordance एटा होची 1 ओके नेक्स्ट होची एसआर राव कौन कहते लैंग्वेज वाज द्राविडियन नाइ द्राविड किसी सर नथिला attempt to read the contents of the inscription of the terms of analysis between Harappan and Sumerian signs na attempt to read the scripture containing pre-Indo एटा pre-Indo-Aryan language and Indo-European family एटा अब कौन को नंबर 2 देखिया 1 रो सी कोड अछि एटा बा बाहरी गलानी देखिया हेले एसआर राव attempt to read the एटा हमारा कौन करथिला हरप्पन और सुमेरियन एटा होची 1 2 3 ओके पार्पोला लैंग्वेज द्राविडियन रिलेटेड होमोफोन्स पार्पोला एटा पंचला 5 ओके आंसर अब सी से कहिछि कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अ स्पीच ऑफ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफ मार्क कार्नी एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भाई स्पीच पे ना सुनिया पड़ो कौन कहयो हाउ स्टेटमेंट 1 द मिडिल पावर्स मस्ट एक्ट टुगेदर ठीक वी आर नाइदर एट द टेबल नॉर ऑन द मेन्यू ठीक बिकॉज लिखि दबा आमको मिसिकी काम करिया पड़ो सब डेवलपिंग नेशंस आमको मिसिकी काम करिया पड़िवो काइना जदि सुपर पावर जंती यूएसए चाइना रशिया यदि मारपीट हेले समान मिसी हेले आमको केही पचारिबेनी ठीक अछि ऑप्शन है 41 ए बुझला which of the following cities acted as a meeting point for trade routes from east to west and from north to south from historical perspective Kausambi Ujjain Mathura Python I think it's Mathura कहना दीटा मेजर ट्रेड रूट्स अच्छी जोटा कि होची कौन थला सेटा उत्तर पथ और दक्षिण पथ उत्तर पथ आउ दक्षिण पथ ओके सो इट वाज बेसिकली फोर्टिफाइड एंड ऑल सेट पे आई थिंक आंसर हो मथुरा तुम मैंने कमेंट करियो कौन इलेक्शन आंसर ओके
With reference to the temple architecture Odisha, consider the following statements. The Vidyarthee temple near Sonpur has a lofty gateway. Na. Lofty gateway माने कौन? तोरण. तोरण नहीं. नहीं एटा भूल. The Vaital temple at Bhubaneswar is designed in Khakra style. ठीक. The Sun temple Konark is a living temple. Na. Living temple माने कौन? पूजा पूजी होउछि सेठी. तेने कोणार्क तो पूजा पूजी होउनी. नॉन लिविंग टेम्पल है ये भूले. द 64 अग्नि टेम्पल एट हीरापुर इज सर्कुलर इन प्लान. ठीक थोड़े पढ़ा यूपीएससी क्वेश्चन पढ़ा ओनली टेम्पल विथ माने सर्कुलर टेम्पल ओनली सर्कुलर टेम्पल. ओके तो यार आंसर कौन हम कौन पचार केटा करेक्ट दीटा करेक्ट 43B एटा बेसिकली हाँ वैद्यनाथ टेम्पलटा गोटे जोटा सेटा हूँ कोशल स्टाइल रही कोशल स्टाइल. ओके माने ता भीतर इंटीग्रेट कार्विंग्स अच्छे बट तोरण नहीं. ओके नेक्स्ट with reference to Jai Rajguru, consider the following statement. His full name was Jai Krishna Rajguru Mahapatra. Very good. He was royal preceptor to Mukund Deva II. Very good. He mobilized an army of pikers and revolted against the British in India in 1804. ठीक है. On 6 December 1806, he was executed in Midnapur. ठीक है. So all four correct. Next. Which literary source mentions Kalinga and Odra along with the sacred river Baitarani and goddess Biraja? Okay. यार आंसर होउछि कोन ना महाभारत केमिति कहउछि हमर जो महाभारत रे बण पर्व करथिले हला कोन करथिले ना बण पर्व एइतरे कोन हेइतिला एडा गोटे तीर्थ यात्रा हला एइतरे कोन हेइतिला ना युधिष्ठिरंकु गोटे सेज थिले तांका नाउ छि लोमांसा आई गेस लोमांसा मजे ती मन पड़छि लोमांसा सेज लोमांसा. ओके सी हला गाइड करथिले युधिष्ठिरंकु क्वाड को ना कलिंग को एई जिंसटा मेंशन हला इट कलिंग ओड्रा विषय मेंशन हला आउ से कहले कि सेई पाखरे होली रिवर अछि कोन ना बैतरणी आउ सेई पाखापाखि गॉडेज विरजा भी मिलबे बुझिला. तो इथि हम महाभारत रे अछि युधिष्ठिर को कहते रे सेज लोमांसा. नेक्स्ट 46 which of the following statements is not correct with respect to the minister of councils of how देखिए the total number of ministers excluding the prime minister should not exceed 999 एटा including हबो including एटा भूले गेला. 91st Constitution Amendment Act introduced a cap on the number of ministers in the council. ठीक है. The principle of 15% of the total strength legislative are also applicable to states in the Indian Union. ठीक है. The ceiling of the numerical strength of council of ministers is limited to 15% the strength of the both houses. Na only Lok Sabha. Okay, it both houses no. तो आमर कोटा कोटा भूल गला कौन पचारथिला नॉट करेक्ट कोटा कोटा नॉट करेक्ट 1 and 4 बुझला. नेक्स्ट क्वेश्चन 47 हु एडवांस द स्लोगन एक देश में दो विधान दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे इनसड़ा कहिथिले हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बुझला. ए केबे कहिथिले जतले जे&के मर्जर हेतला ओडे है जे&के मर्ज होता है इंडियन यूनियन सहित सेबे कहते. ओके नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड एक्सप्लेनेशन. ओके अगेन स्टेटमेंट देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए. द फंडामेंटल राइट्स आर एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड. ना ये तो भूलेगा स्टेटमेंट ही भूलेगा. ओके तो स्टेटमेंट ही भूल देखिए स्टेटमेंट भूल मैंने आम कथबार्ता नहीं आम डायरेक्ट डी मारिया. ओके और बाकी सबुतर स्टेटमेंटा करेक्ट अच्छे स्टेटमेंट वन कर भूल गला मैंने सब लगा था डी सीधा डी मारियो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस अच्छे. ओके जोड़ा ये लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है आईडी रिजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन राइट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी सिक्योरिटी एंड पब्लिक ऑर्डर. ओके नेक्स्ट ये कौन बुली वाला रोटेट के करन दिया हां येला. ओके से कहिछि एठी
The concept of judicial review in India is primarily derived from the constitution of dash, while the concept of parliamentary sovereignty is influenced by dash. ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ତ ୟୁକେ 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 କୋଉଠି ଅଛି ଗୋଟେ ଥ୍ରୀ ଅଛି ଏଇଟା ତ ୟୁଏସଏ ଏଇଟା ୟୁକେ ଆଉ କ'ଣ ସରିଲା ଅପସନ୍ ଏ 49 ଏ ନେକ୍ସଟ ଏଇଟା ଥିଲା କ'ଣ କହିଲ ଲड्डू ଲड्डू क्वेश्चन A data protection law restricts sharing of personal data, but RTA activists argue it weakens transparency. हाँ देखिए ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुए कंपनी मागंती आमर डेटा आमे दबुनी कि ना कहीं ना आमर प्राइवेसी अच्छे हला दीटा राइट एटी वायलेट छ राइट टू इन्फॉर्मेशन गोटे राइट टू प्राइवेसी गोटे दीटा को कॉन्फ्लिक्ट होछन देखिए तो एटा कोन कहै कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू फंडामेंटल राइट्स ठीक एटा ही मेन जिंस तो एठी ना पर्सनल डेटा एटी प्राइवेसी ऊपर कथा है आरटीआई एक्टिविस्ट मागुचंती एटा ट्रांसपेरेंसी वीकनेस वीकेंस कलाडो कोन ना इन्फॉर्मेशन मिलनी तो राइट टू इन्फॉर्मेशन टा सेटा हैरान होचंती ओके अगेन स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन सो कहै डिजिटल गवर्नेंस कैन एनहांस इंक्लूजन ठीक एटा तो ठीक इट एलिमिनेट्स ऑल फॉर्म्स एंड एक्सक्लूजन मन को इंक्लूड कला परी को सब एक्सक्लूजन वाला जिंस हरे दो ना करना नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन it is an overstatement एटा काइंड ऑफ भूल तो ये मु कहि परिबी एटा सी 51 सी करेक्ट अच्छी बट ई इज इनकरेक्ट इट्स एन ओवरस्टेटमेंट यार सब को ऑल फॉर्म्स एंड एक्सक्लूजन कौन से एलिमिनेट कर दो डिजिटल गवर्नेंस बिल्कुल नहीं भाई Now, consider the following statements regarding the departmentally related parliamentary standing committee. तो basically parliamentary standing committee ऊपर कथा था. Permanent regular panels to frame legislation. समझते किसी ने? Parliament करे standing committees केबे regulations sorry legislations frame करे नहीं. तो one टा भूलेला देखिए क्यों पचाची how many ताल छाड़ा सब पढ़िया पढ़ियो. They also examine the demand for grants for various departments during the budget process and review policies and performance of departments. Ita ठीक अच्छे. There are 22 such committees consisting of 31 members each. No 22 no है 24 committees 24 committees अच्छे. Okay हेले भी चेक कर दो हम माने मु तो जे पंद पढ़ितली 24 थिला. Okay then the fourth statement, the estimate committee and the public accounts committee are the two most important. ठीक अच्छे most important दीटा ही ठीक अच्छे तब बी हम आंसर देखिए कत नंबर थला एटा 52 बी मन रख पिले एटा सेट है चलची हाउ 53 कह कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लू फ्लैग बीचेस blue flag certification is awarded to coastal sites that meet international standards of cleanliness, water quality, safety, sustainable management. ठीक है okay. The certification is granted by the Ministry of Forest and Climate Change. No. Certification ta mile amara Foundation for Environment Education. That is FEE. Okay, not कौन सेटा थिला हमारा MOEFCC होला. अब एटा की कोठी अछि ना डेनमार्क. Okay, एटा भूलियाला. In India, the Blue Flag program is implemented under the Integrated Coastal Zone Management Program. ठीक है. India has achieved Blue Flag certification for 18 beaches. Okay, across 7 coastal states and 4 union territories. Okay, इटा होची ठीक है. Answer होची C. Only 3 correct. बुझला? Next question. 54. Come on. More than half we have done. अब ठीक है. Come on. Assertion कौन लिखी increasing atmospheric CO2 reduces carbonate ion availability in seawater. Dissolved CO2 forms carbonic acid which releases hydrogen ions that binds with the carbonate ions. Okay देखिबा first CO2 जदि बढ़ी जाए CO2 बढ़ी गले ओशियन एसिडिफिकेशन हबो हां कि ना जदि एसिडिफिकेशन बढ़ी जाए देन जो हमर ओशियन भितर अवेलेबल ये थाए आमर कार्बोनेट आयन्स थाए कार्बोनेट आयन्स जोटा कौन CO3 माइनस एटा एटा कौन हुए कमी जीव ऑफ कोर्स कमी जीव हला तो जेतले CO2 सी वाटर रे आसे जेतले CO2 जेतले हमर कोन कहि परबी
CO2 सी वाटर रे ऐड है माने कहि दउछन तोडा सी वाटर को ऐड है ताहले कोन हबो ना कार्बनिक एसिड तयारी हबो हाँ कि ना जोड़ा कौन जो H2CO3 कार्बनिक एसिड इटा कौन करियो इट विल ब्रेक एंड रिलीज इटा कौन हम इटा ब्रेक करिवो रिलीज करिवो कौन ना हाइड्रोजन आयन कोटा H प्लस जिते H प्लस आयन रिलीज करुच्ची H प्लस टा कौन हम इटा कंबाइन हो क्या सहित कंबाइन हो विथ एक्जिस्टिंग CO3 2 माइनस कार्बोनेट आयन्स एटा फॉर्म कौन करियो कौन फॉर्म करियो कौन फॉर्म करियो एटा फॉर्म करियो HC3 माइनस HCO3 माइनस कौन एटा these आउ ए जो HCO3 माइनस जोटा एटा कौन करे जो हमर फ्री कार्बोनेट आयन्स थाए सेटा को रिड्यूस कर दिए कार्बोनेट आयन्स बुझेला तो एटी कौन लिखछि से इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 रिड्यूसेस कार्बोनेट आयन अवेलेबिलिटी एटा ठीक अछि dissolved CO2 forms carbonic acid which releases hydrogen ions that bind with carbonate ions पूरा ही प्रोसेस टा कहली तो ठीक अछि दुईटा आगो कोडा ऑप्शन ए होबा कथा बुझेला नेक्स्ट HPV vaccination drive असला ओके बढ़िया से कहछि इट इज एम्ड एट कॉम्बैटिंग सर्विकल कैंसर now the foremost common cancer in Indian women एटा टिके मो टिके एपट सेपट कहना इट इज नॉट द मोस्ट कॉमन कैंसर मोस्ट कॉमन होचे हमर ब्रेस्ट कैंसर तो इथपे मो एटा को टिके भूल मानुची देखिए द टारगेट ग्रुप इज गर्ल्स ऑफ 14 इयर्स ऑफ एज ठीक अछि एटा गार्दासिल 9 इज a HPV वैक्सीन ठीक अछि गावी द वैक्सीन अलायंस प्रोवाइडेड $250 million इन फंडिंग फॉर वैक्सीनेटिंग चिल्ड्रन ठीक अछि तीनटा ठीक अछि फर्स्ट ठीक इनकरेक्ट आइदर डी नहले ओनली वन ठीक अछि एटा टिके देखियो एटा मो डाउट अछि आइदर ए नहले डी ओके एना मोस्ट कॉमन होची ब्रेस्ट कैंसर सर्विकल कैंसर न है जति मो आइडिया अछि मे भी भूल ही पारथे पारे हो 56 को होची कि द हिंदू मुहूर्त इज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 48 minutes ड्यूरेशन ठीक अछि एटा ठीक अछि माने बेसिकली 1/30 ऑफ अ डे माने 24 hours हेले हमर एटा 48 minutes बाहर ठीक अछि ईच मुहूर्त इज डिवाइडेड इनटू 30 कला ठीक अछि नक्षत्र इज सन्स एस्ट्रेरिज्म ना सन्स में मून्स एटा मून लूनर मैंशन एटा ओके ए सॉरी एटा भूलेला करण इज कारण कि करण मु जानि एटा इज हाफ ऑफ तिथि ठीक अछि एटा तो ओनली 3 करेक्ट ठीक अछि तिथि माने कोन तिथि होची लूनर डे आ गोटे तिथि रे दीटा करण थाए Consider the following statements. Originally, the Constitution provided CGI with 7 judges. ठीक अच्छे टा को आर्टिकल थिला आर्टिकल 124 रो 1 ठीक अच्छे The Supreme Court Number of Judges Act 1956 was enacted to increase the number of judges to 10 excluding CJI ठीक The act has been amended 5 times ना एठी भूलेला एटा 6 times एच केबे केबे एच को ईयर रे 1960 रे थरे हला जो थरे कि 13 जन आसीगले 1978 रे 17 जन को माने बढ़िला देन 1986 रे 25 2008 9 रे 30 हेले 2019 रे 33 हेले एंड 2026 रे 37 हेले ओके तो 1 2 3 4 5 6 थर एटा भूल गला The maximum increase of strength of judges was by amendment of 2008 2008 रे देखिया 80 केते बढ़िले 5 बढ़िले but सबडर अधिक बढ़थिले 80 1986 रे 8 जन बढ़थिले एटा भूल गला तो 1 and 2 करेक्ट एटा रीजनिंग क्वेश्चन गला नेक्स्ट which of the following statements about NATO is not correct अच्छा NATO was created by 12 countries from Europe and North America. ठीक है NATO was created on 4th April 1949. ठीक है As of March 2026, NATO has 34 members. नहीं 32 members. 32 members अच्छे हला 32 members. Last दीटा की ऐड है फिनलैंड आउ स्वीडन ओके
तो एटा भूल गला, इट इज नॉट करेक्ट. अल्बानिया जॉइंड नेटो इन 2009 एटा ठीक अछि. ओके, तो ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पैसिव यूथनेशिया. कौन लिखिछि करेक्ट आंसर हो. द सुप्रीम कोर्ट नेवर अलाउड पैसिव यूथनेशिया. एटा भूल गला, सीधा भूल. देखिया ऑप्शंस देखिया, एटा गोटे भूल गला, एटा गोटे भूल गला. अच्छा हो, तो 2 तो कंपलसरी ठीक अछि. हम 3 और 4 देखिया डायरेक्ट. आर्टिकल 21 इज एसोसिएटेड विथ राइट टू डाई विथ डिग्निटी. एटा ठीक अछि. 4 ठीक अछि. तो ऑप्शन सी 2 and 4 इज करेक्ट. एटा आई डोंट थिंक सो इट्स करेक्ट. ओके. इट जो नवतेज सिंह जोहर थिला, एटा जो हमर थाय ना होमोसेक्सुअलिटी, एटा को डिक्रिमिनलाइज करथिला ए केसटा. ओके, एटा हमर यूथनेशिया ऊपर किछ नथला. तो 2 and 4 आर करेक्ट. Which of the following option following is an oviparous animal? Oviparous माने कौन? वो अंडा भी दिए किंतु मैमल. Platypus अंडा दिया, मैमल भी. Next, consider the following statements regarding the intertropical convergence zone. It is a zone of high pressure where trade winds diverge near equator. अरे भाई हाई प्रेशर केमिति तमर हबर ये माने जोन टा तयारी हबो. एटा होची लो प्रेशर. लो प्रेशर आ एटी कन्वर्ज हंती. ओके, तो एटा ही भूल. The convergence of trade winds and rising air currents characterize it. ठीक कथा, माने एयर कॉलम टा राइज करे. ओके, एयर करंट टा जोटा राइज करे. ठीक अछि. During July, it shift towards northward over Indian subcontinent. ठीक अछि. एटा कोन कोचा ओडा वर्ड monsoon trough. ओके, बट ट्रफ, monsoon trough. It is associated with intense convective activity and cloud formation. ठीक अछि. cloud formation प्रबल हुए हला, कहीं ना हमर जो गरम थाए मॉइस्ट गरम और मॉइस्ट वाटर राइज हुए, तो सेत ପାଇଁ कि क्लाउड फॉर्मेशन टा हुए. तो केटा ठीक, तीनटा ठीक. ऑप्शन सी 61 सी. Consider the 62. Consider the following statements regarding the ecological geographical settings lakes of the Odisha. Okay, Kanjia lake नंदनकानन पाखरे. ठीक अछि. सारा लेक पुरी रे. ठीक अछि. लिटरल, लिटरल माने कोन? लिटरल माने कोस्टल प्रोसेसेस, मेनली कोस्टल एरियाज रे हला हुए एडा. Onsupa Lake, inland freshwater lake located in Mahanadi Deltaic region. ठीक अछि. Patta Lake, क्या Patta Lake is a freshwater lake in Gajapati district. ना गजपति नहीं, गंजाम. हेले भी चेक कर दो बेटा है ना, मु कोचेटा भूल अछि. तो ओनली 3 करेक्ट. नेक्स्ट 63 बहुत बड़ा क्वेश्चन अगेन. देखिए धीरे धीरे पढ़े, जानले तुम स्किप कर पारियो कि देखिए हम जे सॉल्व करछ करिया. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस एंड इकोनॉमिक इंप्लिकेशंस ऑफ द फॉर इंडिया एंड ओडिशा. ओके, ओडिशा हैज ऑलरेडी रीच्ड द रिप्लेसमेंट फर्टिलिटी रेट जोटा कि 2.1, below 2.1, which implies that its working age population share will peak earlier than in states of Uttar Pradesh. ठीक, कह दूँ खाली ठीक. पढ़ो न पढ़ो मुझे जाननी, आइडिया थी बनते, बट इट्स करेक्ट. The demographic dividend in Odisha is contingent on labor force participation rate, which for women in Odisha are significantly lower than the national average. ठीक है. The aging index in Odisha is projected to increase sharply by 2041, increasing the burden on the social security and healthcare system. ठीक है. Migration from Odisha to other states is predominantly circular and male dominated, leading to feminization of agriculture in source district. ठीक है. पुओ मैंने पढ़ुचंदी बाहर चाकरी करिया माने ये करिया माइग्रेंट वर्कर दो घर जो माने अछन स्त्री लोक माने के झियो माने अछन हम चाष काम लागछन त घर भीतर. तो चारटा को ठीक अछि. ऑप्शन डी. नेक्स्ट, consider the following statements about tribal demography and policy implications in Odisha. Odisha has the highest number of particularly vulnerable tribal groups, that is 13 out of 75 nationally, and several PVTGs have shown population decline in the last 2 decadal censuses. That is correct. Reverse migration during COVID-19 resulted in temporary increase in the dependency ratio in the source district. ठीक है, फेरी असले ना dependency बढ़िया. Odisha's policies of PVTG development through habitat approach has been criticized for ignoring migrant PVTG workers who move seasonally for work. ठीक है. The decadal growth rate of ST population in Odisha is higher than the non-ST population due to improved enumeration. Nah. It is still somewhere around 17.75%. So I don't think ST cover the body value. So I think option 4 ta bhul. So only 3 are correct. Option C, 64C.
65. For which of the following purposes is Indian currency fully convertible? Fully convertible कोटा है पिरो repatriation of remittances ठीक है 100% convertible जोटा कि गोटे होची हमरो सॉरी current account हला तो एटा पूरा INR convertible एटा interest payments from foreign loans again current account and yes of course एटा convertible direct foreign investment एटा गोटे capital account but this is partially convertible not fully तो एटा हबने indirect foreign investment हाँ ठीक अच्छे again एटा गोटे capital account and it is 100% convertible trade हला जो आम international trade गला that is also 100% convertible तो आमर खाली 3 टा हबने माने कि 3 जोटी अछि काट दबा एडी 3 अछि एडी 3 अछि आ बाकी तो हम जानचे बाकी सब करेक्ट अछि बोली बी हबा आंसर व्हाट इज 65 बी 66 जीवा consider the pairs and choose the incorrect one अच्छा भूल कोटा है देखिए मोगलीपुट्टा तिसा presided over the third Buddhist council is it correct guys is it correct of course it is correct next देखिए धर्मरथ the last Mauryan ruler killed by the पुष्यमित्र शुंगा नहीं पुष्यमित्र शुंगा जो last Mauryan ruler किए थिले last Mauryan ruler थिले हम बृहद रथ ओके नॉट धर्मरथ एटा भूल गला इनकरेक्ट एटा तो आंसर हला एटा एटा नो आंसर हम ऑप्शन बी होचे आंसर ओके 67 which of the following Vedic texts expound the pranagnyotri and agnihotra the fire oblation through breath as a substitute for basic rite very difficult question हार्डली कि जब पढ़ो ऋग्वेद सब पढ़ो ऋग्वेद यजुर्वेद सब पूरा मुखस्थ थी एटा आंसर कर परियो नले के कर परियोनी तो यार आंसर ही होचे 67 रहउची ए ओके ऋग्वेद रे लिखा हिच कौशिताकी अरण्यक ओके नेक्स्ट क्वेश्चन 68 all the information concerning about the black hole episode is found in a single sided account offered by an Englishman what is the name of an Englishman ब्लैक होल एपिसोड कौन होता ना गोटे छोट जगार बहुत जन को रखिकी मैंने इम्प्रेजन कराउला तो काइंड ऑफ सफोकेशन लोक मरी जाते बहुत जन ओके तो ये होते जॉन जेड हॉलवेल 69 अच्छा वी हैव फिनिश्ड 2/3 ऑफ द टेस्ट हियर तो पुणी अथर जाओ पानी पी दियो मुझे पानी पी दिए पानी पी देलो वेरी गुड लेट्स कम बैक Consider the following statements. First question is Anantavarman Chodaganga Deva shifted the capital from Kalinga Nagara, Mukhalingam, to Kataka, modern Katak Chodakwa. Is it correct? 69. Thik. It is correct. Next question Ananga Bhima Deva III defeated the Kalachuris and captured a major part of western Odisha. Thik ach. Narsimha Deva first defeated Tughan Khan, the Muslim governor of Bengal. Thik. Bhanudeva second erected the Ananta Vasudeva temple at Bhubaneswar. ना Ananta Vasudeva temple किए करथिले भानुदेव करनथिले ये करथिले रानी चंद्रिका देवी ओके रानी चंद्रिका देवी जदि के भुवनेश्वर आसछ अनंत वासुदेव मंदिर रे अभडा खाइबो उफ की स्वाद निश्चित रूप ट्राई करो if any non-Odia student is watching this I was saying if you ever visit Bhubaneswar you need to go to Ananta Vasudeva temple and have abhada there it's very tasty okay so tinta correct option C okay question number 70 which of the following statements is not correct in 1607 Jahangir declared Odisha as a separate subha The Subha of Odisha was divided into 7 sarkars. ना 5 sarkars. कौन किए थिले एटा मन कौन सरकार थिला कटक भद्रक जलेश्वर कलिंग दंडपत आउ राजमहेंद्री ओके एटा 5टा सरकार थिला तो एटा भूल गला इन नॉट करेक्ट तो बी हब आंसर हो नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग पर्सनालिटीज विथ रेस्पेक्ट टू प्रजामंडल मूवमेंट ओके सारंगधर दास ये किए थे सारंगधर दास जी थे
सी हेले कौन कहि परिया से जने प्रिंसिपल लीडर थिले हमर कहार ना आउ कौन थिले सेक्रेटरी ऑफ ओडिशा स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस मन पड़ला ओडिशा स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस तार लीडर थिले पवित्र मोहन प्रधान किए थिले पवित्र मोहन प्रधान थिले प्रेसिडेंट कहार ना तालचेर प्रजामहल तालचेर प्रजामंडल ओके राजेंद्र नारायण भंजदो ये थिले जने राजा थिले ठीक अछि ही वाज किंग ऑफ कर्णिका द आंसर अब ऑप्शन 3 आ हरे कृष्ण महताब किए थिले ना ही चेयर्ड द स्टेट इंक्वायरी कमिटी तो पचाची कौन नॉट एसोसिएटेड तो राजेंद्र बाबू आंसर ओनली वन इज नॉट एसोसिएटेड विथ द प्रजामंडल मूवमेंट what is the pupil teacher ratio at the primary school level as mandated by right to education act 2009 30:1 avashya explanation nahi hai which of the following statements is not correct with respect to triple test formula is established by Indian parliament kahin ki parliament kiye koriya eta judiciary okay eta bhul gala it's not correct sir option A hoje answer with reference to the then Supreme Court of India, they consider the following state. It has original jurisdiction. Reference to the it has the original jurisdiction on in disputes between the center and states. ठीक है को article एड़ा article 131. It can issue writs for enforcement. Article 32. It acts as a court of appeal. ठीक है It can amend constitution. कहीं किसी कोई करे parliament करियो ना parliament does it. Okay, so 1, 2, 3 correct. Option 1. Next, a panchayat denies forest access to community citing conservation laws despite traditional use of right. Okay, question hochi which principle is violated? Legal positivism? I don't think so. Procedural fairness only? No. Substantive justice and community rights. Substantive justice and community rights. It is कौन कहया माने ए जो जिनसटा हला it is fundamentally unfair to their livelihood तांका livelihood तो forest ये ना forest जहाँ भी बाहरची products उड़ा को सही through so it is very unfair to them. Next 76. Not all rights based laws lead to equitable outcomes. Structural inequalities affect access to these rights. यार correct explanation भी है structural inequalities. The Assam State Assembly election was held recently with newly delimited constituencies. Consider the following. The delimitation was conducted by Election Commission of the India in 2022 and 23 on the basis of 2001 census. Prior to this constitution, as per the delimitation on 1976, 8A of Representation Act provides for the special provision for delimitation assembly of constituency Assam, Manipur, Nagaland, Arunachal Pradesh. SC Assembly seats have increased from 8 to 9 and ST assembly seats are 16 to 19. Take all correct. हले भी check कर दो. Okay, किसी यदि भूल हो जाए मतलब comments रे कहबो I will recheck it and let you know the correct answer. Okay. If with reference to fly ash management and utilization, consider the following. Unscientific disposal of fly ash can lead to land degradation. Take of course. Thermal power plants in India are mandated to achieve 100% fly ash utilization within specified time frame. Take the majority of fly ash in India is utilized in cement industry. ना एबे नहीं एबे और सीमेंट नहीं सीमेंट थिला एबे ता ऊपर अच्छे हमर कोन ना हमर जो रोड एंड फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन रोज रोड और फ्लाईओवर जोटा कंस्ट्रक्शन रोज सही तरह इथरे ऑलमोस्ट 32% फ्लाई एश हमर ये होची इथरे खसिके 27% रेस देछि ओके एटा भूल मोर देन 300 मिलियन टन्स ऑफ फ्लाई एश वाज गेनफुली यूज्ड इन ठीक है तो तीनटा करेक्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स biodiversity includes diversity as genetic species and ecosystem levels ठीक है the term biodiversity was popularized by Edward Wilson ठीक है biodiversity refers only to the species diversities no एट पे हम कथा ले genetic species और ecosystem levels all three तो यार आंसर अब 1 and 2 okay now we have to zoom it again okay fine consider the following statements of King Rajendra Chola the first. He assumed the title of Kataram Kondam. Is it correct? Yeah, it is correct. He conquered the Khmer Empire. A question टिके मोर डाउट रोचे बट कहीं ना एटा कनकर करना थिले
सी तांको भीतर डिप्लोमेटिक अलायंस रखिथिले ओके जति कि मु पढी he promoted the local self governance ठीक अछि he was succeeded by son Rajendra the second तांको son Rajendra second नथिले ओके yes राजेंद्र सेकंड नथिले तांको पुओ थिले राजाधिराज चोला द फर्स्ट किए थिले राजाधिराज चोला द फर्स्ट तो इट दीटा ही करेक्ट 1 and 3 ओके अकॉर्डिंग टू मी Madden Salvo launch of naval anti-ship missile short range Nasam Nisar was conducted at ITR Chandipur recently. Okay. Which of the following is not true? Okay. कौन कोड़ा true नहीं देखिए first 2 missiles were launched in the quick succession from the same fighter jet true कराई नथले okay fighter jet ना fighter jet ना इटा हम Sea King Mark 42B helicopter थिला सेटा उड़ा ओके एटा भूल गला वन भूल वन कोड कोड अछि कौन पचाछि से व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ओ तले इटा हबनी ओके डेवलप्ड बाय टाटा एडवांस सिस्टम ना टाटा एडवांस नथिला सेटा एटा भूल गला टू भी भूल गला एटा हबनी ओके से टाटा कर नथिला एटा करथिला कोन ना किए रिसर्च सेंटर इमारत रिसर्च सेंटर इमारत हाँ कोटी अच्छी हैदराबाद RCI हैदराबाद ओके इट हैज अ जेट वेन कंट्रोल सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिजिनसली ठीक अच्छे तो कोटा कोटा हमर से कौन पूछे नॉट ट्रू आंसर हम 1 and 2 ओके नेक्स्ट forum shopping refers to choosing a favorable court for litigation it is that simple next with reference to the thematic coverage of the 7 chakras of the Indian AI Summit 2026 consider the following okay 7 chakras कौन अच्छे देखिए first हला human capital ठीक है टाइम लगेगा तो इसको लिखिया कोई ना second हला inclusion of social empowerment shorter लिखिए social empowerment third हला हमारा safe and trusted AI fourth हला resilience innovation efficiency sustainability resilience का लिख दो जी 5 हला science 6 हला democratizing the AI resources democratizing AI 7th हला last हला AI for economic development and social good AI for eco development and social good okay देखिए human capital is one of the key themes ठीक है social good is part of the chakras ठीक है inclusion trust resilience और chakras it is also correct तो तीनटा का correct अच्छी okay बुझिला 7टा चक्र लिखी सही हिसाब रे सब जाक इठी अछि next astronomers observe that the sun wobbles or moves in a complex path rather than remaining perfectly stationary in our solar system. What is the primary reason? Sun is reacting to the pressure of the solar winds pushing against the planets. Now, the net gravitational force from the planets is constantly changing and rarely cancels out. Exactly. कौन हुए actually मैं बुझाउछि हमर सूर्य अछि planets अछंती जेमति गोटे अछन लिखि दै छिन खाली हला एनसो planets अछंती दी जण को ग्रेविटेशनल पुल थाए तो जो बड़ बड़ प्लैनेट्स जुपिटर वगैरह हो गले बड़ बहुत अधिक ग्रेविटेशन सी सैड टाणी दौरान सनटा सेपट घुंची जापर ये एपट प्लानेट किए टाणी दूसरी आड़ू पड़े आस तो एमती आमको लगे कि बबल हो चलला भाया आकु ही आम ऑर्बिट करूँ सन को आम ऑर्बिट कर चल तो देखिए गोटे वीडियो थी यूट्यूब कि कौन सनटा गोटे जगह स्टेशनर न था सी मुव करता आगे आम पछे पछे आम एमती मुव करता है जो मुवमेंटा सन रोचे निजर जोटा से केमी मुव कर सेटा मूव करछि हमर प्लैनेट्स गुडाकर जो ग्रेविटेशनल पुल अछि सेटा ता सकासे सेटा मूव करछि ओके तो आंसर होछि बी पीटी पॉलीइथिलीन टेरेफ्थलेट अगेन PYQ bottles are widely used for carbonated drinks why are these bottles generally included single use को कहीं हुए ना आमे देखो जर्म्स मारियो के हमें हीट दरकार जदि हम प्लास्टिक को हीट करबा सेटा कोन हो मेल्ट हो which is not usable अब मेल्ट हो गले आमे जदि सहितरे पीबा त पानी रे हमर प्लास्टिक्स भी आसजो तो डाकी हम भितरु पळेबो सेटा मैं ये करपन तो देखिया
कोड आप आंसर द प्लास्टिक इज पोरस एंड ब्रैक्टरी इफ नॉट क्लीन विथ हाइड एंड मेल्ट्स द बॉटल एटा फर्स्ट टाइम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन consider the following statements marked as assertion assertion and reasoning El Nino events are often associated with weaker southwest monsoon rainfall over India ठीक है El Nino leads to warming of sea surface temperatures ठीक है in the eastern Pacific ठीक है which disrupts the normal water circulation ठीक है तो both एटा अछि तार रीजनिंग भी ठीक अछि जदि हम जानि छ वर्कर्स येटा कोन हमर लेट लिखा हिजो वर्कर्स वर्कर सर्कुलेशन हमको सब्सक्राइब करथा वीडियोस आसीबो कमेंट रे कहि देले म तापर एडे वीडियो आनकी डन ओके consider the following statements regarding the footloose industries they are highly dependent on the availability of bulky raw materials and specific locations ना ताकू हाई माने वेट बल्की मटेरियल्स दरकार नहीं कि स्पेसिफिक लोकेशन दरकार कोठी भी और केमती भी आस जाई पारे ओके हमें चेक करिया ना कोटा कोटा से कहि नॉट करेक्ट पचारछि तो फर्स्ट ता नॉट करेक्ट 81 एटा ताले आंसर हबनी they can be located over a wide range of regions due to minimal एटा ठीक अछि ओके टू जोडी जोडी अछि हमें नॉट करेक्ट पचारछि ना टू जोडी जोडी अछि काट दा एट काट देला हला एक्सेस टू ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ठीक अछि तो एटा भूल होछि हमर तो आंसर होछि ए 87 ए okay consider the following statements okay again Eastern Ghats region of Odisha is a part of ancient Gondwana landmass and represents a stable peninsular shield structure ठीक अछि the region is predominantly composed of peak Cambrian crystalline and metamorphic rods that have undergone limited tectonic disturbance ठीक अछि answer होगा A okay next particularly in relation to the industry and energy import profile industry and energy okay देखिए coking coal Australia Indonesia and South Africa okay এটা like that 2 crude oil and petroleum West Asian countries such as UAE ठीक अछि एटा 1 next क्या heavy machinery China Germany Japan United States ठीक अछि fertilizers China Russia Oman ठीक अछि 2 1 3 4 देखिया कोड अछि option B ठीक अछि next consider the following statements regarding 16th finance commission it retained the vertical share of the divisible pool of central taxes of 41% the same as recommended by the 15th finance commission it auchi thick the commission introduced a new contribution to GDP criterion with a weight of 10% replacing the tax and fiscal efforts ठीक अछि FC 16 discontinued revenue deficit grants also known as the revenue need grants under article 275 which were recommended by the previous commission ठीक अछि the commission recommended that states should reduce the fiscal deficit to 2.5% of GSDP by 2021 while the center should target 3.5 now GDP ପାଇଁ କି 3% 3.5% ओके आ GSDP ପାଇଁ କି सेटा थिला 3% not 2.5% हला एटा 2.5% ते एटा हमरा भूल हे जाउछ सो कोन पछे केटा करेक्ट 1 2 3 करेक्ट नेक्स्ट consider the following statements about affirmative action and reservation policies in India and Odisha the 103rd Constitutional Amendment Act provides for the 10% reservation for EWS and Odisha has implemented criminal ठीक अछि 8 lakhs income हिसाब कर दैछ Supreme Court judgment of Janhit Abhiyan versus Atiki upheld the reservation but held that it cannot be applied as a subquota within the SC and ST এটা simply किछि it did not rule that EWS cannot be applied as a subquota that भूल Odisha state reservation policy OBC uses double creamy layer नहीं Odisha रे double creamy layer use हो नहीं reservation for persons with disabilities in Odisha's panchayat elections calculated as a percentage of total seats and not population leading to underrepresentation now there's no structural reservation is provided for disabilities person with disabilities okay तो कौन कोड़ा हमर के गोटे ही ठीक है only one next arrange the following events of the reign of the Muhammad bin Tughlaq chronologically okay chronological देखिया chronological देखिया गले हमर first आसी shifted to the capital Delhi to Daulatabad एटा हेतला हमर 1327 रे then as जाउची हमर increased taxes of the Doab region सेटा आसीला 1328 to 29 रे okay planned the expedition of Khorasan na introduction of token currency asthila 1329 to 30 and Khorasan the last रे थिला 1330
to 31. ओके तो आमर कौन है फर्स्ट आसीगला 2 2 1 4 3 एटा डी ऑप्शन डी 92 डी. ओके if you think otherwise let me know in the comments. The Mughal school of painting is characterized by okay तांकर थिला miniature paintings ठीक, excellence in portrait painting ठीक, portrait painting करथले, keen appreciation of the nature हाँ, democratic and popular in content ना ना ना, never democratic, never. They were court centric and they were not for the masses. मतलब निजो विषय खाली चिंता करे. Courtly and aristocratic exactly. Secular materialistic ठीक, spiritual and mystic ठीक है. तो आम खाली 4 टा डिलीट करा 4 कोडे नहीं एटा तो हबनी एटा हबनी एटा हबनी तो ऑप्शन बी होबा आंसर. गॉट इट. 94 व्हेन डिड गंजाम कम अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल. ब्रिटिश कंट्रोल ले केबे आसीला एटा होचे 1766. डायरेक्ट क्वेश्चन नो एक्सप्लेनेशन. हरिशपुर द रीजन ऑफ फर्स्ट ब्रिटिश सेटलमेंट लोकेटेड इन जगत सिंहपुर एटा. ओके Consider the following statements with respect to privileges of members of okay parliamentary privileges super कथा अर्था करछे. देखिया privileges would not be fettered by article 19(1)(a) of Indian Constitution. इटा ठीक अछि. Privileges must be read subject to article 20 20 to 22 and article 32 of the Constitution. ठीक अछि. Immunity is available in relation to both civil and criminal. No not in criminal procedures prosecution sorry. तो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशंस एंड प्रिवेंटेड डिटेंशन में इम्यूनिटी नहीं. इम्यूनिटी इज अवेलेबल इन रिलेशन टू फ्रीडम ऑफ स्पीच इवन इवन प्राइवेट और पर्सनल कैपेसिटी ना ना नॉट इन प्राइवेट और पर्सनल से पार्लियामेंट भीतर जति कहि परिए कहले वोटिंग किबा ये रे ता छडा कोठी भी कहले तांका एगेस्ट जीवो कथाडा. तो 1 and 2 आर करेक्ट. ट्रू पचारछि तो दीटा करेक्ट. ऑप्शन बी. इन रेस्पेक्ट ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ व्हाट इज नॉट करेक्ट. ओके देखिए एंटी डिफेक्शन इज फाउंड इन द 9th शेड्यूल ना 9th में 10th शेड्यूल एटा भूल गेला. हो देखिए से 1 पचारछि कोडी अछि 89 89 तो 1 and 4 3 और 4 भीतर देखदा. सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू मेक रूल्स फॉर गिविंग इफेक्ट टू द एंटी डिफेक्शन लॉ. एटा सुप्रीम कोर्ट नुहे पार्लियामेंट मेनली स्पीकर किंबा चेयरमैन. ओके एटा भूल गेला. आंसर अब 1 and 4. ओके which type of public policy is when the individual self interest and rational choice shape political decisions. Public choice model policy or कौन. Okay, match the following. बलवंत राय मेहता कमेटी पूरा ऑप्शन स्टेप देखिए दो. हाँ हमारा उससे 99 आउ दीटा क्वेश्चन कम ऑन गाइस हे जो बलवंत राय मेहता कमेटी कौन करथिले रेकमेंडेड 3 टायर सिस्टम. वेरी गुड एटा 1. अशोक मेहता कमेटी सजेस्टेड 2 टायर. ओके 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन पंचायत आस्थिला. एलएम सिंघवी ग्राम सभा इंपोर्टेंस ठीक अछि. तो 1 2 3 4 कोडा अछि ऑप्शन ए. ओके जब तमर किछि भी डाउट होचे आंसर्स मु जहां भी कहूचे देन कमेंट रे निश्चित रूपे जणाइबो मु सेडा को रीचेक करिवो. ओके कंसीडर द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू इंडियाज बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन. इंडिया यूजेस मार्केट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट्स ठीक. Biodiversity conservation is linked to livelihoods. ठीक. Environmental policies ignore global frameworks. ना not ignore. समझ ता सता align करके चलनते जेमते कि CBD हे गला. ओके देन पेरिस एग्रीमेंट हे गला. ओके तो एटा भूल हेला 3 भूल 3 कुड भूल अछि. एटी भूल हबो एटा भूल हबो. ओके 1 तो ठीक अछि माने एटा आंसर ओको. So finally we have completed 100 questions of OPSC OCS 2025 GS paper 1. आशा करुछि आपनको एक्सप्लेनेशन सब बुझा पड़थिबो आ मु भलसे बुझेई पारथिबी. जदि भी किछ को पार्ट बुझी हलानी कि को क्वेश्चन में तमरा डाउट रह गेले कि नाही एटा ही पारथंदा आंसर एटा हबोनी मते निश्चित रूपे कमेंट रे जणाइबे. एंड मते निश्चित रूपे कहबे कि तमरको केते लागु जे एथरा कट ऑफ जिवो. ओके तम निजो स्कोर भी जणाई पारिबो एंड इफ नॉट तमे गोटे आइडिया दे परिबो केते कट ऑफ जाउछ बोली. ओके आउ कि जदि नुआ पिला आइछ सब्सक्राइब करिना चैनल को ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करि दियो. आगु को और बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियोस आसियर अछि एंड इट वोंट बी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड बट पूरा क्रिस्प टू द पॉइंट व्हिच इज नीडेड फॉर द एग्जाम. से हिसाब रे मु वीडियोस आनिबी. अननेसेसरी टॉपिक्स अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मु दबारा नहीं तम मनू पूरा पूरा फिल्टर्ड आउट कंटेंट मु तुमको देबी. ओके सो आई होप टू सी यू इन द अपकमिंग वीडियोस. क्वेश्चन चेक कर दियो सब आंसर्स मार्किंग देखि दियो तुम कौन केते को मार्क होजे से सर मेंस में प्रिपरेशन स्टार्ट कर दियो एंड विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप लर्निंग एंड स्टे क्यूरियस.